Automatic launch sequence is checking out the various launch vehicle and satellite health parameters. All are looking quite green. As you can see on your screen, the GSLV waiting for the next 3 minutes for it to have a liftoff. And just a quick look at the liftoff sequence. We will have at T minus 4.8 seconds. Command for ignition for all liquid strap-ons will be issued. Point changeover for PCV control is normal. And this being a liquid engine, it takes for some time for it to develop the required thrust. Then during the launch minus 1.8 to 0.3 seconds, the performance of all 4 liquid strap-ons will be checked to ensure that the launch operations are progressing properly. The countdown is at minus 2 minutes 35 seconds. So only after confirming the nominal performance, command for igniting the solid core stage S139 is being issued. So once the S139 gets ignited, the vehicle lifts off, because only then it attains the required thrust or energy to lift the 450 tons of launch vehicle. So countdown is at minus 2 minutes 13 seconds. Automatic launch sequence is in final phase of clearing all the health parameters for the launch vehicle. A view of the Mission Control Center. Chairman ISRO, Director Satish Dhawan Space Center, Sri Kunnikrishnan. Minus 1 minute 53 seconds. So as I mentioned, we should have the ignition of L40s at minus 4.8 seconds, followed by ignition of S139 at T0. So all green as of now. Mark minus 1 minute 30 seconds. Minus 1 minute 30 seconds. उड़ान अब करीब 1 मिनट 20 सेकंड के बाद शुरू होने वाली है और इसके शुरू होने के करीब 1024 सेकंड पर इनसेट 3DR उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। उस समय रॉकेट की गति लगभग 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो चुकी होगी, जो कि वह गति है जो उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक है। Minus 55 seconds. So minus 55 seconds. Minus 50 seconds. All sequences armed. Minus 45 seconds. L40 accumulated charging started. Minus 40 seconds. Minus 40 seconds. Minus 35 seconds. Tank ready. Aero stage ready. Minus 30 seconds. रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड। उड़ान में अब केवल 25 सेकंड की दूरी। Minus 20 seconds. 15 seconds. GS1 ignition, cryo-arm, key locks enabled. 10, 9, UPS cut off normal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L40 0, ignited. plus 1. Yes. Plus 2. GS1 L40 ignited. performance Vehicle normal uniform, and S139 normal. ignition. Vehicle lifts off from the launch pad. Plus 7. Plus 8. शानदार तरीके से Plus 10 seconds. यान ने अपनी यात्रा शुरू की, उड़ान स्थल को छोड़ा P2 tracking. और अब अपने नियत मार्ग पर जाते हुए आप देख रहे हैं Stage performance normal. Plus 20 seconds. एक बहुत ही शानदार उड़ान। प्रथम चरण पूरी तरीके से प्रज्वलित। 25 seconds. GSLV majestically going through the atmospheric phase. परत का उपयोग किया गया है जो कि पॉलीयूरेथेन पदार्थ पर आधारित है। साथ ही दूसरा सुधार किया गया है वो है यान के कोणीय वेग Plus को 13 minutes. बड़ी सटीकता से नापने के लिए अंकीय जायरोस्कोपिक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है और साथ ही जड़ा 35 seconds Plus 14 minutes. and the relative velocity is around 8 km per second. The velocity that is ignited 300 seconds into the flight starts. This is the kind of preparation that is required before preparing the stage for its actual ignition at the vacuum conditions. So 913 seconds into the flight, 8.7, another 1 kilometer bit. And as I see on my screen, the orbit is around 170 by 36,000 kilometers with an inclination of 20.61 degrees. And we just heard the announcement, INSAT 3DR has been successfully separated at 1023 seconds. 3DR mission is accomplished. अब हम आपको एमसीसी ले चलते हैं जहां पर अध्यक्ष महोदय, इसरो के अध्यक्ष महोदय सबको संबोधित करेंगे।
वो इस समय सभी इंजीनियर्स को और वैज्ञानिकों को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को बधाई दे रहे हैं और उसके बाद वो इसरो कम्युनिटी को और देश को संबोधित करेंगे।